What can the audience expect from your short film? The audience can expect a lot of no joke. The audience can expect a lot of me and Apoorva not being me and Apoorva and being completely different characters. Absolutely. And I think they can also expect to see scenes that will remind them of their own families and जो उनकी family में बातें होती हैं casually. और एक इन्फ्लुएंसर कपल की बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं, मतलब आप उनको देख के आपको लगता है कि यार इनकी लाइफ सच में इतनी परफेक्ट है क्या, मतलब क्या सच में इतना प्यार में है, तो वो आपको इनसाइड न्यूज मिलेगी. बिल्कुल बिल्कुल. और ना ये फिल्म कहीं भी प्रीची नहीं हो रही है, बात हम बड़ी गहरी कर रहे हैं, बिकॉज इवन दो इट्स अबाउट एन इन्फ्लुएंसर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर की फैमिली रिलेट कर पाएगी. बहुत सारे कपल्स में, बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा मोमेंट आता है जब एक इंसान कुछ अलग करने जाता है और दूसरे को नेविगेट करना मुश्किल होता है कि अब इसकी लाइफ चेंज हो गई तो हम क्या करें. they mean well of course, but उनको समझ नहीं आता. It's new. It's like being a new parent. आपके छोटा बच्चा, आपको पता नहीं उसको कैसे पालना है. It's almost like that. तो वो सारी चीजें हर फैमिली के साथ होती हैं कभी ना कभी किसी पॉइंट पे. And I think a lot of housewives who finally found a passion in life, a lot of women will relate to this, because I think like Bhavna is playing a married woman who has just found a calling in life, and she's tasting success, like which is way more than what her husband has ever seen or anybody in the family has seen. Correct. So I think a lot of women will relate to the stuff that we've shown. Okay, that's actually my next question. What are Bhavna and Sankalp like? Are they like the two of you in real life? पता नहीं. No, not at all. I'm more like Bhavna. My reference for Bhavna was him. Yeah, but Sankalp is yes, I understand Sankalp because I've seen a lot of Sankalps, and I think where I'm very different from Sankalp is I understand what he's saying as his thoughts, but his behavior is not very me. He's very meek. He's very shant. He's always the one who will give you the benefit of doubt. I am the exact opposite. So that's why we're a little different. And Bhavna, बताइए. I think मेरे केस में वैसा होता है कि मैं भावना की तरह नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं आदत कि मैं सब चीज रिकॉर्ड करूँ या सब चीज इंस्टाग्राम पे डालूं या मैं एज एन इन्फ्लुएंसर फंक्शन करूँ. मेरा वैसा होता है कि मैं सेट पे जाऊँ, शूटिंग करूँ, घर पे आ जाऊँ, कुछ मिल जाए उसमें से मुझे तो मैं वो पोस्ट कर दूँ. तो भावना का वैसा है कि इट्स अ जॉब टू बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया एंड टॉक अबाउट हर लाइफ, मेक रिलेटेबल वीडियोस, और हर वक्त उसको कंटेंट ढूंढना है अपनी लाइफ में से. तो वो ही ढूंढती रहती है हमेशा कि कोई किसी ने बात बोल दी तो उसका उसने पूरा एक मोनोलॉग बना दिया. तो वो वैसा कैरेक्टर है. और भावना का बात करने का तरीका मेरे लिए बहुत अलग था, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली बट आई नेवर प्लेड अ प्रॉपर दिल्ली कैरेक्टर जो इस तरह से बात करती हो. तो वो चैनल करना था मुझे. और एक हाउसवाइफ है, ऑब्वियसली मैं हाउसवाइफ भी नहीं हूँ और मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए वो भी एक नया था सीखना कि कैसे बिहेव करती है, सास के साथ कैसे बिहेव करती है और वो सब चीजें. और तो एक दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय एक्चुअल पर्सनालिटी. उसका बात करने का पेस ही बिल्कुल अलग था मेरे लिए. आई डिड अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई हैव स्पोकन अबाउट एंड लकीली माय डायरेक्टर सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड मी आउट विद इट. ही लेट मी डू इट. कि भावना फंबल करती है क्योंकि वो सोचती कम है, बोलती ज्यादा है. तो जो ऐसा होता है तो सेंटेंसेस आपके ठीक से फॉर्म नहीं होते. तो वो एक चीज मैंने अटेम्प्ट करी है टू मेक श्योर दैट भावना साउंड्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल माय अदर कैरेक्टर्स. So let's see how that looks. I'm actually very excited to see it. Did you like the trailer? Yeah, I actually liked it a lot. I obviously got to see it right now when all of you released it as well. And it was really entertaining to watch. Thank you. My next question is, as content creators, how does it feel to be a part of a film that is about content creators? I mean, Apoorva to like, she's a great actor. She's done so much acting. She's way more experienced in that regard. But I think as a content creator, when I got to be in a project जहाँ मैं content creator नहीं play कर रहा हूँ, I'm the other person. So I think वो थोड़ा difficult तो नहीं बोलूँगा. I mean, it was a character that I was playing and I understood that character. But on set मुझे ऐसा लगता था कि यार संकल्प ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे समझ तो आ रहा है मुझे भावना क्या बोल रही है, because as a content creator I can understand भावना, right? भावना की भावना. So मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे अपने दिमाग में I was like, Ankush is more on the side of Bhavna, but okay, focus, I'm playing Sankalp and I'm doing this. But at the same time, Sankalp is like it's a middle class family. He comes from a middle class family, much like I do. So I could understand his trail of thought. I could understand movies में बाकी characters क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं. It's not justified, but I can understand where they're coming from and whatever. So I think I was in a space where I could understand both the characters pretty well. So
Yeah, it was fun to be in a project about content creators and not play the हाँ. content creator. I think I liked it. in my case तो मतलब मैं नहीं हूँ कंटेंट क्रिएटर क्योंकि मैं कंटेंट बनाती ही नहीं हूँ. मैं तो आई एम एन एक्टर, मैं बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ. तो मुझे नहीं पता कि कैसे होता है लाइफ इनसाइड, कैसा है लाइफ. मेरे को आई नो पीपल, आई सी देयर इंस्टाग्राम, तो मेरे को उतना ही पता है कि हाँ ओके दिस इज द कंटेंट, व्हाटएवर दे चूज टू स्पीक अबाउट इज व्हाट आई नो. बाकी एज एन एक्टर वही था कि मुझे कुछ को ऑब्जर्व करना था. ये मेरा सीक्रेट होमवर्क था कैसे होता है कंटेंट क्रिएटर्स. तो तभी ये मुझसे इतना बात कर रही थी सेट पे. नाउ आई नो. इस्तेमाल. तो हाँ मतलब मेरे लिए दिस वाज वेरी डिफरेंट. I think playing a Sankalp would have been easier for me. Because and playing बिल्कुल Bhavna भी would have नहीं. ये been. चुप ही नहीं रहती. ये चुप ही नहीं होती. ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि संकल्प प्ले कर. संकल्प had to be very restrained and शांत. Right. ये उल्टा जवाब दे देती. हाँ, that's true actually. मैं रोक नहीं पाती खुद को. But as an artist मैं समझ सकती हूँ content creator का, because आप चीजें create कर रहे हो, आप artist हो. और in my case also as an actor होता है कि धीरे धीरे आप फेमस होने लगते हो, तो फैमिली के लिए कुछ कुछ चीजें बदलती हैं, कजन्स के लिए चीजें बदलती हैं, फ्रेंड्स के लिए बदलती हैं. सो वो मैं उस चीज से मैं अच्छी तरह रिलेट कर सकती हूँ जो फिल्म में हो रहा है कि संकल्प का बिहेवियर ऐसा क्यों रहा है भावना के साथ, और भावना का जो उसकी तरफ एक वो गुस्सा निकलना कि यार तू जेलस होता है क्या, ये वो. सो वो मैं समझ सकती हूँ. दैट एस्पेक्ट आई गेट. Right. Okay. How do you maintain a work-life balance in real life since you're consuming content for a living? So how does it work? Like, do you take a break from social media to unwind? How do I maintain work-life balance? I don't. Yeah, same. I don't know how to, and I haven't been able to, so I can't answer that. मैं तो एज अ जोक जैसे अपने पेरेंट्स को बोल दिया, या मैनेजर से बातचीत हो रही है तो बोल दिया कि चलो अब ना 8 बज गए, मेरे वर्किंग आवर्स अब ना खत्म हो गए, मुझसे बात मत करना. आधे घंटे बाद मैं ही उनको मैसेज करूँ, इसका कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होता. कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता. Okay. There's always someone with more followers, likes, more engagement. In a world where everyone is chasing numbers, does this get to you at all? Yes, I'm very jealous of the fact that Apoorva has so many followers and I'm not even close to 1 million. और मैं यहाँ सोच रही हूँ मेरे 2 क्यों नहीं हो रहे. It's a never-ending thing, you know. This is a struggle that this is the thing that I faced when I had 10k followers, and that is one thing that hasn't changed my journey at all. कि आज उस टाइम मुझे लगता था कि यार 100k हो जाए, बस 100k चाहिए. 100k मिल गए, फिर 200k कब होंगे, 300. It's an ongoing thing, at least for me. Like I'm constantly obsessing over numbers, which is unhealthy, but I mean the least I can do is be honest about it with the audience that I am obsessed with it, and it's unhealthy. मतलब मैंने एक चीज फिगर आउट करी है कि you are going to be obsessed with it because even as an actor numbers Instagram के मैटर करते हैं. कास्टिंग में आजकल चीजें बदल गई हैं तो आप सोचते हो ज्यादा, एंड बस वो है कि कीपिंग इट असाइड फॉर अ वाइल वाली बात है कि इफ यू फिगर दैट आउट कि आपने सोच लिया कि ये आज मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं बढ़ रहे, बस आपने सोचा है, उसके बाद आप परेशान मत हो, उसको लेके बैठ मत जाओ. डोंट लेट दैट लाइक थॉट इन योर हेड फॉर टू लॉन्ग. तो आई थिंक देन यू आर सॉर्टेड. Right. Like तो हो गए. Apoorva like rightly said कि a lot actually it's not just self-worth जो आपके numbers से attached है, it's also your market value which is attached to your numbers, and that is the world that we live in right now, that in our industry your following and your social media clout does matter. No matter what work you're doing, it does matter. So at some point the worry is to stay relevant कि मतलब you know, you to even stay afloat you have to constantly rise. You can't stay at the same number and stay afloat because other people are getting ahead. So it is an occupational hazard, there's no denying that. But one thing I've also come to realize on a serious note is that हर एक की journey बहुत अलग होती है. Everybody eventually ends up in like very different paths, and हर एक की growth का rate भी बहुत कम होता है. There are some people who become overnight successes, and I've constantly compared myself to them कि यार ये मेरे लिए कब होगा, that one spike in the following वो मेरे लिए कब आएगी. मेरे लिए कभी नहीं आई है. But I know that all these years of hard work have paid off for me in the sense that I have grown steadily, slowly but steadily. So you also at one point have to disconnect and accept that there is no formula to things. There is no reasoning to why things happen better for other people and why they're not happening for you. So the faster you just learn to accept and not accept, I think it'll just make it a little easier. Baki insecurity to rahegi hamesha, but it'll just make it a little easier. Absolutely. Do you think that content is king when everyone's chasing trends and numbers? Debatable, actually.
I think content is king. से पहले question आता है what defines as content anymore. Right. Because I mean, what, like for example, what for me is content may not be good content for other people. I may look at, like, there are people I've heard who say कि यार ये lip syncing reels बना के कैसे लोग famous हो रहे हैं, and they look down upon it. But there is an audience for that also, so that is also content, right? That is not content for you, but for someone else it is content. So वो content की और अपनी personality show करने की जो boundaries है ना, वो blur हो गई हैं. So there is nobody on the internet who can define content क्या होता है और what is cringe and what is. So I mean, yeah, content is king, so is your personality, so is the timing of it all, so is the algorithm. There's so much at play, you can't really define it. That's true. Right. Okay, I think that's pretty much it. Okay. Thank you so much. I'm really looking forward to watching this film. Yay, fingers crossed. Hope you like it. Thanks for talking to us. You too. Bye-bye. Bye. Thank you, Shachi. Thank you.